Hello students, today we start reading and writing fill in the blanks. First of all, we start with Cat Haring. Cat Haring began as an underground artist. Literally, his first famous project were pieces of stylized graffiti. जो उनका पहला famous project था वो क्या था? Pieces of stylized graffiti dash in New York subway stations. जो कहाँ पे क्या हुआ था? Drawn. Yes, drawn in New York. New York में drawn हुआ था subway stations. Herring traveled from station to station. Herring ने station to station travel किया, drawing with chalk and chatting with commuters about his work. These doodles helped him to develop his classic style, and he grew so dash. He grew so prolific. Prolific means तेजी से बढ़ना किसी चीज का. He grew so prolific, doing up to 40 drawings a day. एक दिन में ही 40 ड्राइंग्स करते थे. दैट इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर फेम एंड अ मेजर टू फॉर्च्यून फॉलोड. कहते उनको फिर बहुत सारा फेम मिला, बहुत सारा फॉर्च्यून मिला. Soon, galleries and collectors from the art establishment wanted to buy full-sized pieces by Haring. The painting skyrocketed in price. जो पेंटिंग के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे. But this did not sit well with Haring's philosophy. लेकिन हैरिंग की फिलोसफी को ये बात सही नहीं लगी. He believed that art, or at least his art, उन्होंने क्या सोचा कि जो आर्ट है, at least his art, at least उनकी जो खुद की बनाई हुई आर्ट है, was for everyone. क्योंकि अगर पेंटिंग के प्राइस बहुत ज्यादा होंगे तो हर कोई नहीं खरीद सकता. तो वो चाहते थे पेंटिंग का प्राइस कम हो और जो उनकी आर्ट है वो सभी के लिए हो. Herring opened a store which he called the pop shop, which he hoped would attract a broad range of people. While somewhat controversial among street artists, some of dash accused, some of whom accused Herring of selling out, the pop shop changed the way people thought. कहते जो पॉप शॉप था, जो हेरिंग की जो शॉप थी, उन्होंने लोगों का तरीका सोचने का चेंज कर दिया था about the relationship between art and business. So our first answer is drawn in New York subway station, graffiti drawn. Second answer, he grew so prolific. Prolific means तेजी से. थर्ड आंसर, आर्ट और एटलीस्ट हिज आर्ट. एटलीस्ट मतलब कम से कम उनकी आर्ट ऐसी हो जो सभी के लिए हो. एंड लास्ट, सम ऑफ whom, जो कुछ एक जो स्ट्रीट आर्टिस्ट थे उनके लिए लगाया. एक्यूज हेयरिंग ऑफ सेलिंग आउट द पॉप शू चेंज द वे पीपल थॉट. लोगों के विचार उन्होंने चेंज कर दिए. सो आवर फर्स्ट आंसर इज ड्रूमा, सेकंड वन इज प्रोलिफिक, थर्ड वन इज एटलीस्ट, फोर्थ वन इज whom. Move to the next slide. Honorary degree. Victoria University of Wellington has conferred an honorary degree on a distinguished astrophysicist in a recent graduation ceremony. कहते जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक ऑनरी डिग्री दी है जिन्होंने डिस्टिंग्विश किया एस्ट्रोफिजिक्स को ग्रेजुएशन सेरेमनी. प्रोफेसर रिक कॉच, कहते जो प्रोफेसर रिक कॉच है, दैट्स द ऑनरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस. was received, किनको रिसीव हुई? डॉक्टर कोच को. received the honorary degree of Doctor of Science for his remarkable contribution. किस चीज के लिए उनको मिली? Remarkable contribution to our knowledge of galaxies and dark energy. Professor Coase is a distinguished astrophysicist who has dashed a crucial role, who has played who has played a crucial role in the discovery that the universe is expanding at an accelerating rate. तो क्या है, जो प्रोफेसर कोच है उन्होंने प्ले किया थे क्रूशियल रोल इस डिस्कवरी में जो हमारा यूनिवर्स वो एक्सपेंड होता जा रहा है एक्सलेरेटिंग रेट. एक्सलेरेटिंग मींस एट एन अलार्मिंग रेट, बहुत तेजी से बढ़ रहा है. A finding which led to that lead scientists being awarded a Nobel Prize in Physics in 2011, which he attended in recognition of his contribution in his research. Professor Coase has uses large ground-based and space-based telescopes to observe galaxy clusters that are the largest structures in the universe. So, which are the largest structures? जो क्या थे? Largest structures में से एक थे in the universe. He is also involved in number of national and international committees overseeing the management of these telescopes. That's his own research activities. Professor Coates has worked to support. As a result, instead of in addition to, yes, कहते हैं इसके साथ साथ और क्या काम करते थे? In addition to
his own research activities, Professor Coase has worked to support young researchers and provide public comment on astronomy internationally. So our first answer is received, second one is played a crucial role. ये आपकी collocation है यहाँ पर. Then third answer is which are the largest structures. जो गैलेक्सी क्लस्टर था वो एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर था. which. सो यहाँ पे नॉन लिविंग है, इसलिए आंसर क्या आ गया, which आ गया. और अगर यहाँ पे लिविंग थिंग होती तो क्या आता, who. वन मोर थिंग, अगर कभी भी हमें इस चीज में चेकआउट करना है कि यहाँ पे हु विच आएगा या दे दो जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, अगर कहीं पर भी हमारा पहले कोमा लगा हुआ है तो इट मीन्स डब्ल्यू फॉर्म वाला आंसर आएगा. और अगर यहाँ पे कोमा नहीं लगा हुआ है तो इट मीन्स दे दोस, ऐसे कोई वर्ड आए. क्लियर. सो ये आपके फाइनल एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, कोई भी ब्लैंक. So next question, in addition to. So our first answer is received, second one is played, third one is which. In addition to, इसके अलावा और क्या क्या करते थे, इसके अलावा प्रोफेसर कोच क्या करते थे, यंग रिसर्चर्स को मोटिवेट करते थे, पब्लिक कमेंट जो आते थे एस्ट्रोनॉमी इंटरनेशनली उनके ऊपर कमेंट करते थे. Now, our third slide is about longevity. People are living longer. This longevity is good news for sales team. कहते हैं लोग लंबी लाइफ जी रहे हैं, ये सेल्स टीम के लिए अच्छी बात है. It results in much more dash customer base. It results in much more precise. Precise का मतलब होता है clear, clarity के साथ. Much more precise customer base for them to work from. Why we are living longer is not the issue for everyone. हम लंबी लाइफ क्यों जी रहे हैं, किसी के लिए भी इशू नहीं है. Dash in drawing up plans to market a product for anyone involved. जो लोग इन्वॉल्व हैं मार्केट अ प्रोडक्ट बेचने में, उनके लिए कोई इशू नहीं है लॉन्गिविटी. व्हाट दे फोकस ऑन, वो किस चीज पे फोकस करते हैं, इज द फैक्ट दैट देयर आर नाउ मोर एज ग्रुप्स टारगेट. उनके पास टारगेट नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा रहेंगे, which means that a sales pitch can be reworked a number of times to more exactly fit each one. For example, dash refers simply to adults. rather than means कि simply adults को define करने के बजाय they are now starting adults, young adults, established adults. So बहुत सारे adults की categories बनाई उन्होंने, मे बी 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. तो इस टाइप से वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके लिए. डैश मार्केट नो लॉन्गर टॉक अबाउट चिल्ड्रन. सो सिमिलरली जैसे अडल्ट्स के बारे में सिर्फ एक अडल्ट्स की बात नहीं करते हैं, मतलब अडल्ट्स की बात एक ग्रुप की बात नहीं करते हैं, उसमें स्टार्टिंग अडल्ट्स, यंग अडल्ट्स, एस्टैब्लिश्ड अडल्ट्स, 3 to 4 टाइप्स ऑफ अडल्ट्स की बात करते हैं. सिमिलरली चिल्ड्रन में भी सिर्फ बच्चों की बात नहीं करते हैं, बट टेंड टू रेफर टू फॉर द रेंज कैटेगरीज दैट इंक्लूड्स किड्स, teens, preteens, and teenagers. We now have a very diverse population in terms of age that they only be a dash bonus for business. तो ये business के लिए क्या है, profit की बात है, bonus है business के लिए. So our first answer is precise customer base. Customer base कैसा होगा, clear होगा अगर longevity है. Second, involved के साथ हमेशा in आता है, ये collocation है. Involved in, जो लोग मार्केट प्रोडक्ट कर रहे हैं उनके लिए लॉन्गिविटी कोई इशू नहीं है, जो इन्वॉल्व है इस चीज में. थर्ड आंसर है रादर देन मींस कि सिंपली अडल्ट्स को रेफर करने के बजाय वो बहुत सारे अडल्ट्स को बताते हैं. सिमिलरली मींस कि जैसे चिल्ड्रन में भी सिर्फ चिल्ड्रन की एक कैटेगरी नहीं है, उसमें बहुत सारे किड्स, टीन्स, प्रीटीन्स, टीनेजर्स. देन कहते हैं ये जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, जो ये बहुत डिफरेंट एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, बोनस है. ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैव मैनी कॉमन लिंक्स. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुत सारे कॉमन लिंक्स है. बोथ कंट्रीज वर रिसेंटली सेटल्ड बाय यूरोपियंस, आर प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश स्पीकिंग एंड इन दैट सेंस शेयर अ कॉमन कल्चरल हेरिटेज. अब देखिए मैंने आंसर नहीं देखा, तो कल्चरल हेरिटेज ये क्या है, कोलोकेशन है. कल्चरल हेरिटेज, दोनों का कल्चरल हेरिटेज भी क्या है, सेम है. ऑल्दो इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर, both countries are physically isolated and have some populations by world standard. कहते दोनों ही जो कंट्रीज है वो
Although in close proximity in one another, both countries are geographically isolated. Geographically क्या है? Isolated है, एक दूसरे से अलग अलग है, और जो उनकी पॉपुलेशन है, स्मॉल पॉपुलेशन है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्लियर, वर्ल्ड स्टैंडर्ड में उनकी पॉपुलेशन बहुत कम पॉइंट्स में आती है. दे हैव सिमिलर हिस्ट्रीज एंड एंजॉय क्लोज रिलेशंस टू मैनी fronts. In terms of population deaths, in terms of population characteristics, अगर हम population characteristics की बात करें, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड have much in common. Both countries have minority indigenous population. वो दोनों ही countries में जो खुद की population है बहुत कम है. During the later half of the 20th century, later half of the 20th century means कि after 1950s, have seen a steady stream of migrants. Have seen, देखा गया कि जो steady stream, धीरे धीरे लोग migrate होना start हुए from a variety of reasons, अलग अलग reasons से throughout the world. Both countries have dash similar decline. Both countries have experienced, दोनों ही countries experience कर रही हैं similar decline in fertility since the high levels recorded during the baby boom, and alongside this have enjoyed the benefits of continually improving life expectancy. One consequence of these trends is that, कहते इसका एक result है इस trend का, that both countries are faced with the aging population. दोनों ही countries में aging population बहुत ज्यादा है, and the dash challenge and the associated challenge, और उसके जो साथ के जो challenge है means कि उनकी care करना, medical facilities provide करना, take care करना, providing appropriate care and support for growing group within the community. तो वो उनके लिए क्या बन चुका है? Challenge. So our first answer is cultural heritage. Heritage. Second answer is world standard. Third, population characteristics. Fourth answer is have experienced similar decline. Associated challenge. आप देखिए यहाँ पे हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड वन कोलोकेशंस यूज हुई है. कल्चरल हेरिटेज क्या हमारा कोलोकेशन है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड अगेन कोलोकेशन है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन कोलोकेशन. देन नेक्स्ट है हमारा बोथ कंट्रीज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सो हैव एक्सपीरियंस्ड. Next, one of the consequences of this trend is that both countries are faced with the aging population. यहाँ पे faced word use किया है. Face means face कर रही हैं, और end के साथ sentence को add किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? Associated challenge providing appropriate care and support of this growing population within the community. So our first answer is heritage, second one is standards, third characteristics, fourth experienced, and last one is associated. Language extinct. At the moment there are between 6 and 7,000 languages in the world. कहते हैं at moment इस टाइम पे 6-7 हजार लैंग्वेजेस है पूरी दुनिया में according to linguistics. जो linguistic कौन होते हैं? जो लैंग्वेज को जानते हैं, जो लैंग्वेज के बारे में लिखते हैं. 50% of these are in danger of becoming extinct. So these are in danger of becoming extinct. जो extinct लुप्त होने वाली हैं. The speed of language loss has accelerated over the past few decades. जो स्पीड है लैंग्वेजेस के लॉस होने की वो बढ़ती ही जा रही है लास्ट फ्यू डेकेड से, बिकॉज द बिजनेसेस दैट नीड टू कम्युनिकेट विद अ रेंज ऑफ पीपल. कहते जो बिजनेसेस है उनको जिन लोगों के साथ बात करनी है, इट मींस फ्रॉम अदर कल्चर्स, दैट्स टू एम्प्लॉय, प्रेफर टू एम्प्लॉय, वो प्रेफर करते हैं, prefer to employ more widely used languages. More widely used जो language use होती है, जो लोग उनको जानते हैं सिर्फ उनको prefer करते हैं, such as English, Chinese or Spanish. This attitude is understandable, but it means that many local languages are dying out before anyone has the opportunity, has had the opportunity to study them. यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट इट मींस दैट मैनी लोकल लैंग्वेजेस आर डाइंग आउट. बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस डाइंग आउट हो रही है बिफोर एनीवन, किसी एक की बात की है. सो इसलिए यहाँ पे क्या है? हैज और had वर्ब की थर्ड फॉर्म है. हैज had the opportunity to study them. According to linguistics, some of these languages could reveal a great dash, a great deal. A great deal क्या होता है? आपकी कोलोकेशन होती है. A great deal of useful information about language learning and cognitive development. In addition, a local language that has been built on the local culture contains words and phrases that express that culture. Lose the language and you arguably may lose the culture. तो जब हम किसी लैंग्वेज को खो देते हैं तो इट मीन्स हम उस कल्चर को भी खो देते हैं. एंड फाइनली हिस्टोरियंस विल डैश, विल के बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो विल आर्ग्यू, historians will argue that a language contains evidence of a region's history and so for that
reason along with preserve. So our first answer is of becoming. Second one is pray for. Third answer is anyone who has had the opportunity. Fourth one, a great deal of. And last answer is are you. I hope you understand all the answer. If you have any query, please comment us and also follow and subscribe our channel. Thank you. Have a great time. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.